Okay, so the first question, very simple. So, what explains the shape of the production possibility curve? It's a remember that if the production possibility curve is a linear straight line, it has a constant opportunity cost, right? You know that, right? If the PPC curve is drawn like this, which is this is concave to the origin. If it is concave to the origin, the opportunity cost is increasing. Opportunity cost is always increasing, right? If the production possibility curve is drawn like this is convex to the origin, right? And the production this shows that the opportunity cost is decreasing, right? Understood? What do you mean by increasing opportunity cost? It simply means that let's say you make 1 unit. This is 10. You make 1 unit. So the opportunity cost of making, let's say you were making let's say you were making 11 units. Now you make 1 unit, so the opportunity cost is -1. Then you make another unit, and now the opportunity cost is -2. Then you make another unit, that is 3. So now the opportunity cost should be 3 units should be foregone, so it should be 5. So you can see that for each unit of good X, how many units of good Y are you foregoing? You're foregoing increasing amounts of good Y, right? पहले तो 1 unit forgo कर रहे थे good Y का, now you're foregoing 2, now you're foregoing 3. So the marginal opportunity cost is rising, right? For each additional good X, you're foregoing more units of good Y. This is known as increasing opportunity cost. And why does this happen? This happens because your factors of production or your factor endowment is not suitable to produce good X. Sorry, your factors of production are not suitable to produce good X. Okay? So the answer should be D. The opportunity cost of increasing fish production is constant. इसमें क्या हो रहा होगा? For instance, if you're producing 11, इधर कर लेते हैं. Let's say you're producing 11 units of coconuts and you produce 1 unit of fish. So the opportunity cost is 10, let's say. You don't need 10, no. Let's say मैं इसको 1 ले लेता हूँ. Let's call it 2. So how many units of coconut are you foregoing? 2 units of coconut. Now you produce another unit of fish. So how many units are you foregoing? You're still foregoing 2 units, which is 7. Now you produce another unit of fish, that is 3. So you're foregoing the same number of units of coconuts, right? So you forego 5. You produce one more, and you forego another 2. So it's 3. Constant opportunity cost में क्या होता है? It means that the factors of production are equally suited to produce both coconut and fish, right? ठीक है. Question number 2. She's earning 40 per hour rather than work. She decides to visit a museum for 3 hours. The visit costs $40. What is the opportunity cost of visiting the museum? यार बड़ी सिंपल सी बात है. वो बेसिकली 40 पर आवर कमाती है, ठीक है. वो उसने म्यूजियम विजिट किया 3 आवर्स के लिए. सो म्यूजियम वो जाती है. म्यूजियम कॉस्ट her $40. ये उसने पैसे दिए म्यूजियम जाने के लिए. What is opportunity cost? Opportunity cost is the benefit foregone. What is the benefit so she's paying $40. What is the benefit she's foregoing? She could have earned, how much she could have earned? She could have earned 40 times 3 because she's going to the museum for 3 hours. So she's foregoing $120. That's it. What is opportunity cost? Opportunity cost is the benefit of the next best alternative foregone. So the opportunity cost of visiting the museum is that she could have earned $120. The opportunity cost of paying $40, instead I should just say it, that the opportunity cost of paying $40 is the $120 that this girl is foregoing. Understood? Makes sense? It's a good question. ठीक है, moving forward. आज थोड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में बहुत दिनों के बाद. Question number 3. A newspaper article contains the following comments. ये बहुत अच्छा सवाल है, अटेम्प्ट करें इसको. ये बात याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट को तुम चैलेंज कर सकते हो. तुम चैलेंज कर सकते हो, तुम इसको साबित कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो विद एविडेंस एंड सपोर्ट कि ये स्टेटमेंट या तो गलत है या ये स्टेटमेंट सही है. साबित कर सकते हो एविडेंस के साथ. इट इज एन पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं. सही है ना? जहां पे आप टेस्ट कर सकते हैं उस चीज को, और आप उस चीज को टेस्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं.
ठीक है जी। एनीवेज फैक्ट है ना, आपके सामने फैक्ट्स आ गए, फैक्ट्स खुल के सामने आ गए। आपने बोला इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 12.5% है, हमने कहा चेक करो, पता चला इन्फ्लेशन रेट 14% है। आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि 12.5% है, हमने एविडेंस के साथ प्रूफ कर दिया गलत उसको। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये टेक्निक सिखा रहा हूं, ये हमेशा तुम्हें अब याद रहेगा, ये ट्रिक है। द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी शिफ्टेड मोर टू हाईएस्ट अर्नर्स। कह रहा है आर्टिकल, कह रहा है द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी शिफ्टेड मोर टू हाईएस्ट अर्नर्स, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स रखो। वो कह रहा है कि भाई टैक्स बर्डन जो है वो हाईएस्ट अर्नर्स पे डाल दो। अब ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, इसमें टेस्ट क्या करूं मैं? व्हाट, इसमें कोई टेस्ट करने को तो, ये तो थ्योरी है ना, ये तो नॉर्मेटिव है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल मुस्तफा, कल को मुस्तफा बोलता है द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी शिफ्टेड मोर टू द हाईएस्ट अर्नर्स, मैं बोलूं नो आई डिसएग्री, it should not be shifted to the highest tax earner, it should be shifted to the lowest tax. I disagree. So if you're disagreeing with something, if you're disagreeing with a statement, it means that you disagree on an opinion, you don't disagree on a fact. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, मुस्तफा बोलता है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 12.5 है, मैं बोलता हूँ आई डिसएग्री। मुस्तफा कहता है सर आपको जरा होमवर्क कर लेते हैं, चलें गूगल करते हैं। मुस्तफा ने गूगल खोला, दिखा दिया मुझे। अब तो डिसएग्री नहीं कर सकता ना, फैक्ट आ गया ना मेरे सामने, एविडेंस आ गया, रिजेक्ट हो गई थ्योरी में मेरी। सो when you talk about positive statements, they can easily be rejected or accepted based on evidence and based on facts, right? On the other hand, when you talk about normative statements, these are that you can't accept or reject them because they're opinion based, right? So maybe, yeah, according to Mustafa, the burden of tax should be shifted to highest earners. Okay, maybe according to Wasa, this shouldn't. So normative, right? It is in the public interest that key services are nationalized. I disagree. No, I don't think so that it is in the public interest that key services are nationalized. I think that they shouldn't be nationalized, right? So both are normative statements. Make sense? समझ आ गई normative positive की कहानी? अच्छा, by the way, हर MCQ के लिए you have 1.5 minutes, ठीक है? 1.5 minutes में 30 MCQs आपने खत्म करने हैं. Because a minimum price guarantee for Apple producers removed. Why? Because minimum price is a government intervention. When you move to a market economy, there will be no government intervention, right? So इसका आंसर इसलिए ये होगा. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम मिनिमम प्राइस पे थोड़ी चलता है. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम तो मार्केट प्राइसेस पे चलता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. On a minimum price is a price control. A market economic system has no price controls. Question number 5. Yes, the answer should be B. Demand for the good is price inelastic. Because if price rises, if the good is inelastic, remember, if the good is inelastic, if price rises, total revenue rises. And total revenue equals to total expenditures. Total expenditure will rise as well. The revenue for the firm hoga, expenditure for the consumers hoga, right? Because if the price is rising and the quantity demanded is falling insignificantly, the overall revenue will rise, right? सही है? Make sense? ये बात हम relationship, we already established this relationship in the previous classes. ठीक है? Clear? Question number 6. When will a manufacturer abilities to increase quantity supplied in the short run be greater? Spare capacity. When there will be spare capacity. So basically, if spare capacity होगी, so definitely supply will be more elastic. Elastic होती है. Elastic का एक और word होता है greater than 1 होता है plus the अगर वो कहते हैं ना elasticity is high. If they say that elasticity is high, it means it's greater than 1. If they say elasticity is low, it means it's less than 1. चाहे PD हो या PS हो, XCD हो या YD हो. Elasticity is high means greater than 1, low means less than 1. Question number 7. Supply is falling. And a fall in the price of cream, it's a complement, sorry, my bad. To complement, if the price of complement is falling, then the demand for strawberries will rise, right? Because complement is becoming cheaper, so more people will buy strawberries. Because people will buy more cream, so they'll also buy more strawberries to make more custard, right? So demand will be rising and supply will be falling. So D2 has to intersect S3 at point A. A is the answer. Okay? Question number 8. Good question. 8 is C. Why? Because incomes increase हो रही हैं. If incomes are increasing, so if income is increasing, then अगर normal good होगा, if X is a normal good, then people will buy more X, right?
because incomes are increasing. So people will demand more X if it's a luxury, right? So if the YD is positive, it means it's a normal luxury. So people will buy more normal goods such as X. And the relationship between good X and good Y के बारे में बात हो रही है कि if it's a complement, let's say, it says the price of Y falls, right? So if the price of Y falls, the quantity demanded of Y will rise. Not only that, the demand for X will rise as well. वो कह रहे हैं which combination would give the greatest increase in the demand for good X. वो कह रहे हैं कि अगर X normal good है and it is an X and Y are complements. So if X and Y are complements, if the price of Y falls, the quantity demanded of Y will rise and the demand for X will also rise. So with respect to YD, if it's a normal good, yes, the demand for X will rise, because if the YD of X is positive, it means it's a normal good, which means that if incomes are rising, the demand for X has to rise. Okay? Question number 9. Question 9 का answer should be definitely be D for David. ये तो बहुत सिंपल है, ये तो वो होते हैं फटाफट निपटाने के होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. सो ज्यादा वेस्ट बर्न होगा ना, जब ज्यादा वेस्ट बर्न होगा बिजली बनाने के लिए तो ज्यादा फर्टिलाइजर भी निकलेगा. जब ज्यादा फर्टिलाइजर निकलेगा तो सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ जाएगा. समझे इसमें क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर गिर जाएगा. जब प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ जाएगा. क्या रिलेशन है बता देता हूँ. ये डिमांड है, ये सप्लाई है फर्टिलाइजर की. ठीक है. सो सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ जाएगा एस. तो प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर जब गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो जाएगी ना फर्टिलाइजर की. ये जो मूवमेंट है अलोंग द डिमांड कर्व फॉर फर्टिलाइजर. ठीक है, समझ आ गई बात? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. कह रहे पावर स्टेशन वेस्ट को बर्न कर रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस आल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स. ठीक है. तो अगर डिमांड बढ़ रही है बिजली की तो ज्यादा बर्न होगा वेस्ट बिजली बनाने के लिए. जब बिजली बनाने के लिए ज्यादा वेस्ट बर्न होगा तो ज्यादा बिजली बनेगी, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट भी बनेगा फर्टिलाइजर. क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा सवाल है बहुत. अभी तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है. दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर सप्लाई बढ़ जाती है 60 से तो अब सप्लाई हो जाएगी 190 प्लस 60, दैट इज हाउ मच? दैट इज 250. अब सप्लाई हो जाती है 250, यानी 60 से सप्लाई बढ़ रही है बेसिकली. ठीक है ना. अब अगर 60 से सप्लाई बढ़ रही है, अगर मैं बोलूं कि if the price is 35, if this is the price, at a price of 35, what is the quantity being demanded? What is the quantity being demanded? 210. 210 is being demanded. What is being supplied? 150 is, because if the price is 35, how much will be supplied? 150 will be supplied. So the producers will supply 150 units, right? What is the difference between these two? It's 60. ये जो 60 है, this will obviously be a shortage, which will obviously be fulfilled by the 60 units that have been previously produced. So then the market will be in equilibrium, right? Then the market will be automatically will be in equilibrium. So what I'm trying to say is कि demand 210 है. ठीक है. सप्लाई जो है वो आपकी इस प्राइस पे 150 है. तो 60 यूनिट जो आपके कम बन रहे होंगे वो यहाँ से 60 की कमी पूरी हो जाएगी. So what will be the new equilibrium price? The new equilibrium price would be 35. Question number 12. The diagram shows the demand curve of pineapples. What happens to the value of PED? What happens to the value of the PED when there's a movement from point X to Y, and what describes the value at point Y? B is the right answer. Why? Because अगर हम X से Y पे जा रहे हैं, first of all you need to understand that if the demand curve is linear demand curve, then the price PED along a linear demand curve varies. सही है? That is, ऊपर के part पे it is greater than 1. The PED from here till here will be greater than 1. At this point, the PED is unitary elastic, and below that, the PED is less than 1. So remember that the price elasticity of demand varies along a linear demand curve. So बात वो हो रही है, अगर हम X से Y पे जाएंगे, so obviously the PED will obviously fall because towards the Y X axis the PED is falling, right? PED पहले elastic थी, फिर unitary हुई, फिर less than 1 हो गई, which means that PED is falling. इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते. A value of PED at Y towards the end, the PED of for Y
at y, the PED would obviously be inelastic, since, like I said, is less than 1. ठीक है? Question number 13. The answer is D. Price अगर 5% से rise हो रही है, ठीक है, which firm would experience an increase in quantity supplied of 2.5%, जिसकी PD 0 होगी, so X%, so 5 multiplied by 0.5 कितना होता है? 2.5 होता है ना? परसेंट कैंसिल, so X की वैल्यू आएगी 2.5% से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड राइज हो जाएगी. दिस इज सच अ सिंपल क्वेश्चन. अगर हमारी पीएस जो होगी वो क्या होगी? पीएस ऑफ नेचर जो है वो 0.5 होगा. ठीक है, वैसे इसका सिंपल ये करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ 2.5% यहाँ लिखना था डिवाइडेड बाय 5%, तो आंसर 0.5 आ जाता. क्वेश्चन नंबर 14. Which argument has been used to justify the privatization of state enterprise? Because obviously private firms can produce the same output. इसका मतलब they are productively efficient, right? Efficiency है because same output, fewer inputs, so they are efficient. Productivity जो है वो productivity of factors of production बढ़ रही है इस केस में. So question number 15. A government imposes a maximum rent in order to make rented housing more affordable. What is the long run consequence if the maximum rent is set below the current free market level? इसका तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम प्राइस में शॉर्टेज आती है. क्वेश्चन नंबर 16. डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ग्रांट गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, रेगुलेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन. डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन नहीं है, ग्रांट नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है, सब्सिडी भी नहीं है. बचा क्या? ये बचा. अब गवर्नमेंट अगर टेक ओवर करेगी लोकल बस सर्विस, इसका मतलब है गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग इट इटसेल्फ. गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल सर्विस, राइट? So इसका मतलब this will come under direct provision of goods. Question number 17. 15% sales tax levied. So 15% sales tax is an ad valorem tax and an indirect tax. Question number 18. What is an example of transfer payments? The payment of student grants by the government. ठीक है ना? Student क्या कहते हैं? Students को उनकी education finance करने के लिए for poor students अगर government grants दे रही है तो स्टूडेंट ग्रांट्स किस में आ जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. डी इज द राइट आंसर. हाँ, डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड पेमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स कम कर देंगे तो इससे क्या होगा? अगर आप डिविडेंड पेमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स कम कर देंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो बाहर ले जाएंगे ना वो पेमेंट सारी पैसा. सो आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम कम हो जाएगी इन द करंट अकाउंट. Outflow of investment income in current account will fall, right? Which means that deficit will fall as well. Remember, dividend payment is recorded in the current account under net investments, net investment income. ठीक है. Question number 20. South African rand appreciate हो रहा है. अगर South African rand appreciate हो जाएगा in the foreign exchange markets, so what is? So imports will get cheaper. Imports cheaper हो जाएंगी. So demand for imports will rise. Exports will become expensive. So demand for exports will fall. Import expenditure will rise. Export revenues will fall. Net exports will fall. AD will fall. The reduction in the rate of inflation. 21. Each 4 कंट्रीज है ABCD जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं. ईच सर्कल इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन द कंट्रीज विद इन द सर्कल. यानी ये दिस सर्कल इज बेसिकली representing a free trade area, right? This is basically a free trade area. मतलब any country that is in this area can trade freely with the other countries. ठीक है ना? So for example, if this is the country and this is the country, they both can trade freely with each other. ठीक है? So अब इस सर्कल में हमारे पास एक कंट्री है, कंट्री सी, which means that country C is in a free trade area. ठीक है. अब countries outside of a circle face trade barriers. अब एक और सर्कल है which is this circle as well. ठीक है. इसमें country A आ रहा है and then you have country B. So obviously since country A, अब country A is basically part of which circle by the way?
Country A is part of this circle as well, and country A and B are part of this circle as well, right? So technically, basically, what we can say that country A can trade with country C as well, country A can trade with country B as well, B can trade with A as well, B can trade with C as well, C can trade with B as well, C can trade with A as well. Understood? So basically, हर country जो है वो एक दूसरे के साथ trade कर सकता है, right? So C can trade with A and B, A can trade with B and C. Okay. Now that you have another circle, which is ये पता है ये IQ का सवाल है, economics का सवाल भी नहीं है. Then you have basically have another circle which is this circle, right? And then you have country D. Now, if you see that B is part of which circle? B is part of this circle. So you can say that country B can now trade with country B can now trade with A as well, C as well, and D as well, right? However, country D can only trade with country B. So what I'm saying is that which country has the greatest opportunity? So B has the greatest opportunity because it can freely trade with 3 countries. By the way, what is a free trade area? Anyone? What's a free trade area? So free trade area is basically of barriers such as tariffs and quotas between economies of trading blocks. What are trading blocks? How do you do trading blocks? क्या होते हैं? What are trading blocks? इसको भी देख लो, लिख लो अपने पास. Trading blocks are basically a group of countries, right? They're basically a group of countries who form trade agreements between themselves. And basically, the trading blocks may include three things. Number one, it includes free trade areas. So these countries, they may say that, we're going to be trading freely. They're part of the trading bloc, and इनके दरमियान agreement हो गया. Maybe like Pakistan can form agreements with India or Iraq, with its neighboring countries that, we're going to be a free trade area. We're not going to impose. Now, they can't break this contract after that. Okay? Plus, they could also be a part of custom union. What is a custom union? Custom union is, they say that, we will have a free trade area amongst ourselves, but we will have a common external tariff with non-members. So country A and country B are basically, they are into an agreement. And let's say if they are a custom union, if country A and country B is a custom union, so ये country A country B में इसकी बात नहीं कर रहा है, जो circles में ये अलग country है. This is Pakistan, this is India. इन्होंने agreement किया हुआ है कि ये दोनों आपस में free trade करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि let's suppose हम दोनों मिलके ना USA के साथ हमारे trade barrier tariffs होंगे 5% पे, ठीक है? This is the custom union. Question number 25. अगर यूनाइटेड स्टेट शेयर परचेज करेगा जर्मन बैंक पे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ये बेसिकली कहाँ जाएगी? ये कैपिट उसमें अगर शेयर्स परचेज होंगे, वैसे तो ये जाती है फाइनेंशियल अकाउंट में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत सारे कंट्रीज में ना फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट को एक ही चीज ट्रीट किया जाता है, इसको एक साथ कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल ही की बात हो रही है. तो इसका आंसर क्या होगा कि हाउ विल दीज एक्टिविटीज रिकॉर्डेड इन यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट? यूनाइटेड स्टेट्स परचेज कर रहे हैं ना, यूएस जो है वो जर्मनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और उसके बाद जो डिविडेंड मिलेगा, that will be recorded in the United States current account as a credit balance because it will represent an income for the US. So C should be the answer. But again, यहाँ पे फिर भी मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड ये फाइनेंशियल में होनी चाहिए, लेकिन एमसीक्यू में फाइनेंशियल का जिक्र ही नहीं है. सो बहुत सारे, मतलब फिर बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कैपिटल और फाइनेंशियल को एक ही मानते हैं, ठीक है? यानी मतलब जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होती हैं उनको भी कैपिटल में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो कैपिटल में होती हैं उनको भी कैपिटल में ही करते हैं, ठीक है? लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इकोनॉमिस्ट टू इकोनॉमिस्ट वेरी करता है. तो बता रहा हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से. क्वेश्चन नंबर 26. Which statement describes a disinflation? A fall in the rate of inflation. 26 का आंसर होगा B. 27. In a closed economy, a rise in aggregate demand is needed to increase the output in the country.
what is necessary to achieve this क्या कहते हैं, तो अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ रही है तो obviously enough capacity होनी चाहिए ना. The more capacity you have, the more the short run aggregate supply will be elastic, and the more easily you can actually respond if you have spare capacity. So if you want the output, वरना तो remember Keynesian model में हमने क्या पढ़ा था कि if you are close to full employment and AD is rising, if you don't have the spare capacity, especially at full employment, your output is not rising at YFE. Remember? So even your AD is rising beyond full employment, the output is not rising. Question number 28. तो हमारे पास रिसेशन आ रहा है. नंबर 1, इस तरह देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को ना जिसमें बहुत सारे दिए हुए हो शॉर्ट किया करो. रिसेशन आ रहा है, हमने क्या किया, करेंसी को डी वैल्यू कर दिया. तो रिसेशन आ रहा है, करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी, करेंसी को हम डी वैल्यू करेंगे, करेंसी को हम डी वैल्यू करेंगे, करेंसी को जब डी वैल्यू करेंगे तो एक्सपोर्ट्स हमें चीपर करनी है और इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव करना है. ठीक है. अंडर विच कंडीशन इज अ डेफिसिट मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव. पहली बात तो ये है कि your price last year demand for exports should obviously be great. Yani the sum of price last year and demand for imports and exports should be greater than 1, right? So greater than 1, sum greater than 1 किस में आ रहा है? B में आ रहा है sum greater than 1, और sum greater than 1 D में आ रहा है. 0.8 plus 0.4 is 1.2. ये भी 1.2 है. ये बन रहा है 0.8, ये बन रहा है 0.8, which means कि A भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता. Question 28 का या तो B है या D है. याद है मार्शल लर्नर कंडीशन? इट ओनली वर्क्स व्हेन द PD फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1. सो टोटल करो इनके इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के PDs को. PD फॉर एक्सपोर्ट्स प्लस PD फॉर इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1. B में बन रहा है ग्रेटर देन 1, D में बन रहा है ग्रेटर देन 1. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स जी, the income elasticity of demand for imports should also be greater than 1. Why? अब सुन लो. If the income elasticity of demand for imports is greater than 1, what will happen? If the income elasticity of demand for imports is greater than 1, it means that if incomes are falling, people will import less, right? Because since it's greater than 1, right? So income elasticity of demand for imports का मतलब है how will change in income impact imports? Impact imports. How will change in income impact imports? So basically, if you are entering a recession, so your incomes are falling, which means that, but if your YD for imports is less than 1, it is inelastic. It means that you would give a damn and you would still import no matter your incomes, right? So even if your incomes are falling, you will still import because your income elasticity of demand for imports is inelastic. So if you want your imports to fall and your trade deficit to fall, so the income elasticity of demand should also be elastic as well. That is, the answer should be D, because B में less than 1 है. अगर recession आ रहा है तो incomes गिर रही हैं, so people will import less. But this will only happen if the income elasticity of demand for imports is basically greater than 1 as well. Question 29. What is an example of fiscal policy aimed at increasing the question 29 का answer होगा, it should be C, reducing the rate of income tax. Because income tax is a fiscal policy. When you reduce the rate of income tax, then obviously disposable income rises, so AD rises. So 30, a country with a fixed exchange rate experiences a BOP surplus. Which policy measure will enable it to maintain the exchange rate? बड़ा जबरदस्त सवाल है. BOP surplus में जा रहा है. अगर BOP आपका surplus में जाता है, so basically what happens is that your exports are rising and your imports may be falling. So if your exports are rising, then the demand for the currency is actually rising. So if your demand for the currency is rising, there is a possibility that your currency, the value of the currency, the external value of the currency would basically increase. And if you want to maintain it, what do you need to do? You need to either reduce the demand for the currency or you need to increase the supply of the currency. अब देख लेते हैं MCQs क्या बोल रहे हैं. जी, how will you reduce the demand for the currency? You will reduce the demand for the currency by decreasing the interest rates. How? If you reduce the interest rates, it would reduce the hot money inflows. If the hot money inflows fall, so would the demand for the currency fall as well. पहला वाला नहीं हो सकता. गवर्नमेंट बोरोइंग से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. गवर्नमेंट अगर कम बोरो करेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है.
डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी कोई ताल्लुक नहीं है, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई का भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. सो इवन इफ यू डोंट नो द राइट आंसर, मार्क द रॉन्ग आंसर्स. डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स. द पॉइंट इज कि अगर सरप्लस आ रहा है और एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग, इंपोर्ट्स आर फॉलिंग, व्हिच इज रिजल्टिंग इनटू अ सरप्लस, राइट. एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही होती है, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ रही होती है. अब अगर करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, लेट्स सपोज दिस इज डिमांड फॉर द करेंसी, this supply of the currency, demand for the currency is rising, and you want, this is your fixed exchange rate. This is your fixed exchange rate, right? This is the price of dollars in terms of other currencies. This is the quantity of dollars in terms of other currency. This is the demand for dollars, supply of dollars. So the demand for dollar is rising. You need to pull back the dollars, right? So either you increase the supply of dollars, or you need to reduce it back, right? You need to reduce the demand back. So if you decrease the interest rates, hot money inflows will fall. When hot money inflows will fall, obviously, hot money inflows fall, and so demand for the currency will fall. लेकिन इसका एक और भी तरीका है, by the way.